Hello everyone, this is Shita and today I'm going to teach you about cost. Okay, so in this cost we will see what is cost, fixed variable cost and fixed cost, fixed factor cost, variable factor cost and so many cost will come in this chapter like total cost, average variable cost, average fixed cost, marginal cost and what will be the shape of all these cost. Okay, so coming to the point, that is concept of cost. Okay, so talking about cost, what is cost? So let me define first that cost is a kind of expenditure. Okay, it refers to the expenditure incurred by a producer, that means explicitly cost and implicitly cost. I will tell you later what is explicitly cost and implicitly cost on the factor as well as non-factor inputs. A given output of a commodity. So this is what cost ये कहता है कि जब प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करता है किसी भी गुड्स सर्विसेज को बनाता है, तो उससे उस प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट्स को बनाने में, उस गुड्स को बनाने में जो है जो एक्सपेंडिचर लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, सो द एक्सपेंडिचर occurred or incurred while during the process of production in order to produce products, in order to produce goods. ओके, और ये कॉस्ट जो है, ये एक्सपेंडिचर जो है फैक्टर पे भी लग सकता है और नॉन फैक्टर पे भी. ठीक है, तो अब थोड़ा समझें कि फैक्टर कॉस्ट और नॉन फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ. तो फैक्टर आर बेसिकली दोज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, सो दिस इज व्हाट फैक्टर. तो फैक्टर वो कहता है कि जब लैंड पे लगने वाली खर्च होती है उसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट में आता है. लेबर को जब हायर करते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट है. कैपिटल को जब हायर करते हैं, मशीन वगैरह खरीदते हैं, उस पर जो लगने वाली कॉस्ट या एक्सपेंडिचर होती है उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं. और एंटरप्रेन्योरशिप को जब हायर करते हैं तो जब उसे हम मतलब एक्सपेंडिचर करते हैं उस पर, तो उस पर एक्सपेंडिचर या कॉस्ट लगने वाली है उसे मिल क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं. Whereas talking about non-factor, तो नॉन फैक्टर कॉस्ट वैसे कॉस्ट होते हैं जैसे कि इनपुट कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल या इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट. ठीक है, या कैजुअल वेज वर्क, कैजुअल वेजेस. ठीक है, टू द वर्कर्स. सो दिस विल कम्स इन नॉन फैक्टर कॉस्ट. Now let me again let me come to the topic, that is the two term that has came in the previous slides, that is explicit cost and the second one is implicit cost. What does it mean? It does mean It doesn't mean that explicit costs are those costs which are incurred, incurred in the process of production, on the purchase of goods, on the purchase of inputs from the market. Okay, from the market मतलब कि जब प्रोड्यूसर जो है बाहर से परचेज करे, बाहर से परचेज करे इनपुट को, उस पे लगने वाली कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर. Explicit cost are those costs which are incurred or which is incurred in the process of production on the purchase of inputs from the market, whereas
Implicit cost are those costs or costs which incurred incurred in the process of production, the process of production itself, in itself. मतलब कि सपोज लेट सपोज कि आपने लेबर को हायर नहीं किया, आपने क्या किया, लेबर को बाहर से लाने के बजाय आपने घर के वो लोगों को एज ए लेबर लगा दिया, ठीक है, एज ए वर्कर उन लोगों को हायर कर लिया, घर के लोगों को ही। तो अब क्या, अब घर के खेत है भाई, घर की खेत है तो लोगों की जब मतलब हमें जरूरत ही नहीं है पैसा पेमेंट करने की। तो क्या करते हैं, घर के लोगों को जब हम एज ए लेबर हायर करते हैं, एज ए वर्कर हायर करते हैं, अपने कंपनी में लगा देते हैं, तो उन्हें हम एक कहते हैं बेसिकली हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, that is total cost. What is total cost? So total cost, we can say the summation of explicit cost and implicit cost. Okay, मान लीजिए explicit cost भी हुआ, ठीक है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया उसमें explicit cost भी है, प्लस साथ ही साथ implicit cost भी लगा, ठीक है, from the market, from the home, और वर्क एज सेल्फ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट विल गिव द आउटकम ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके, नाउ so let me tell you that cost is also known as opportunity cost. What is opportunity cost? What is opportunity cost? So opportunity cost refers to the total sacrifice made in terms of explicit, either explicit or implicit, for producing a given level of output. So it is what, just a sacrifice. So it is the refers to the total sacrifice. Hmm? Total sacrifice made in terms of explicit and implicit implicit cost in the process of production. That is what अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एक एग्जांपल पे बताऊं तो लेट्स सपोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है फिर से समझते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द सैक्रिफाइस और गिव अप what we give up in order to have another one another one। जैसे कि मैं मार्केट गई, आई हैव ओनली 5 रुपीज, I have only 5 rupees, and there are two chocolates, like suppose there are Munch and other is Dairy Milk or Kit Kat, whatever. Okay, so I have 5 rupees, and if I go to market and I choose, there's this the price is also 5 and this price is also 5. Okay, the price of Munch is also 5 and the price of Kit Kat is also 5. Let's suppose I go to market. Okay, I go to market and I choose Munch instead of Dairy Milk. Okay, so I'm I am just taking chocolate and giving up this chocolate. Okay, so what I am giving up, what I am missing out, this is what opportunity cost। जो मैं मिस कर रही हूँ ना, वो क्या होगा, opportunity cost होगा, in order to have munch। ठीक है, मंच को लेने के लिए मैं डेयरी मिल्क को या किटकैट जो भी है यहाँ पे मैं गिव अप कर रही हूँ, मिस आउट कर रही हूँ, दिस विल व्हाट, दिस डेयरी मिल्क इज व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज इट ओके? नाउ
Let me make difference of explicit cost and implicit cost. So in one side, that is explicit cost, another side, that is implicit cost. So explicit cost is, it is the opportunity cost of purchasing inputs from the market. It is the opportunity cost purchased from the market, whereas in implicit cost, it is the opportunity cost of using self on inputs. So it is the opportunity cost of using self on इनपुट्स. जैसे मैं एक मैंने एक कंपनी खोला, मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट का बार बार एग्जांपल दे रही हूँ कि ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट में. सब लेट सपोज कि मैंने एक कंपनी खोला और उस कंपनी में जब कंपनी में लोग मतलब मुझे लेबर की ज़रूरत है, तो मैं लेबर को बाहर से ना खरीद कर मैं अपने घर के लोगों को एज ए लेबर रख दूँ, तो वो क्या होगा, एज ए वर्कर हायर कर लूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमें उसे कोई पर्टिकुलर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम, तो वो क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया. सेकेंड, it is measured in terms of cash payment that a firm makes to others for purchase of inputs. If we see example like wages paid to the workers, payment of electricity bill. Okay, so payment, electricity bill, wages paid to the workers, right? Now, in second, in implicit cost, that is estimated rent on entrepreneurs on building, and we can also say estimated interest on entrepreneurs on capital. Let's suppose कि मैं अपनी कंपनी में एज ए एंटरप्रेन्योर या मेरे पास मशीन कुछ पड़े हुए थे, ठीक है, मुझे बाहर से परचेज नहीं करने पड़े, तो उसका कुछ इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, तो वो जब इंटरेस्ट मैं खुद रख ले रही हूँ, दैट इज व्हाट इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो estimated estimated rent on entrepreneur on building. Yeah, estimated interest, estimated interest entrepreneurs on capital. So this is the difference between explicit cost and implicit cost. Moving ahead and talking about the selling cost and production cost. So there is much difference between selling cost and production cost. So selling cost, if we define, selling cost is nothing but the cost incurred due to make advertisement or due to just promotion of selling, promotion of goods or promotion of selling of goods. Okay, like अगर मैं जो मैंने गुड्स का प्रोडक्शन किया उसे मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, उसे मैं प्रमोशन करना चाहती हूँ गुड्स को, ताकि वो उसकी सेलिंग जो है अच्छे से हो सके, तो उसके लिए मैं एडवर्टाइजमेंट जब कर रही हूँ ना, तो दैट विल कम्स इन सेलिंग कॉस्ट. ओके, सो सेलिंग कॉस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट. ओके, कीप इन माइंड कि सेलिंग कॉस्ट जो होता है टोटली जो है प्रोडक्शन कॉस्ट से वो काफी डिफरेंट होता है. सेलिंग कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू प्रमोट सेल ऑफ द कमोडिटी. ओके, सो दिस इज व्हाट selling cost. Selling cost is the expenditure
incurred by the producer to promote sale of the commodity. Sale of the commodity. So this is what selling cost. So we say, let's suppose an advertisement I am making in the market regarding goods of or commodity. Okay, in order to promote the goods, in order to promote the sale of the goods, that is what selling cost. Okay, तो वो selling cost में आएगा. बात अगर production cost की करें, production cost क्या होता है? Production cost refers to the expenditure incurred by the producers, like explicitly or implicitly, on the inputs for producing a given level of output. ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जब हम बेसिकली कह सकते हैं कि जब हम इनपुट्स बाहर से या मार्केट से हम जब परचेज कर रहे हैं तो उस पर लगने वाली जो कॉस्ट होती है ना, या बाहर से कुछ लेबर्स को हायर कर रहे हैं तो उस पर लगने वाली जो कॉस्ट होती है ना, उस पर लगने वाली जो खर्च होती है ना, वो क्या हो गया? प्रोडक्शन कॉस्ट. So it refers to expenditure incurred. It refers to the expenditure incurred by the producers. That is, it could be explicitly, ठीक है, and implicitly. It could be both. On the inputs, for producing given level of output. That is for production cost. Now, if I difference or if I talk about what is short run cost and long run cost, short run cost and long run cost, let me define, or let me tell you first the difference between short run and long run. Again, I am just going to tell about short run and long run in the previous lecture, that is in a production function. I also made a difference between short run and long run over this topic. Okay, again I'm going to tell what is short run, how just we can recognize the short run and long run difference. Okay, so short run just a time period. So short run is nothing but the time period which is too short and can't adjust or change in fixed factor. सो कीप इन माइंड कि शॉर्ट रन में ही, जब हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड या शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें ही होता है फिक्स फैक्टर. एक होता है फिक्स फैक्टर और दूसरा जो होता है वो वेरिएबल फैक्टर कहलाता है. बट जबकि लॉन्ग रन में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर्स के पास क्या है, इनफ टाइम है. दे कैन ब्रिंग अ लॉट चेंज बिटवीन वेरिएबल्स. वो फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकता है. दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरिएबल इन द लॉन्ग रन. ओके, सो वेरिएबल फैक्टर्स. Okay, now come to the point, that is short run cost. Okay, so मैंने बता दिया कि short run क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है. अब आते हैं शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन कॉस्ट को समझने से पहले थोड़ा शॉर्ट रन क्या होता है और फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स किसमें बोलते हैं ये समझना जरूरी था. नाउ शॉर्ट रन कॉस्ट एंड सेव ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट. हम लोग शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है वो भी देखेंगे और शॉर्ट रन कॉस्ट का सेप क्या होता है वो भी देखेंगे. सेप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट. ओके, सो शॉर्ट रन कॉस्ट
is a period of time during which some factors are fixed and some are variable. Again, I'm telling this is nothing. Short run is a period of time which shows the difference between fixed factor and variable factor. Now, talking about that is what fixed factor. So, fixed factor. So, fixed factor cost, which we can say that referring to those expenditure on fixed factor. ओके, जो हम फिक्स फैक्टर को खरीदने में हमें जो एक्सपेंडिचर लग रहा है उसे हम लोग कहेंगे फिक्स फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि बखूबी नाम से समझ आ रहा है कि फिक्स फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो फिक्स फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है या वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम फिक्स फैक्टर को खरीदने के लिए जो हमें एक्सपेंडिचर लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स फैक्टर कॉस्ट। Whereas variable cost, variable factor cost. So वेरिएबल फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो वैसी कॉस्ट जो बेसिकली कह सकते हैं कि जो जैसे कि इनपुट्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, खरीदने में जो कॉस्ट लग रहा है, जो वेरिएबल है, जो शॉर्ट रन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, वैसे फैक्टर्स को खरीदने में जब हमें एक्सपेंडिचर लग रही है, खर्च लग रही है, कॉस्ट लग रही है, दैट इज व्हाट वेरिएबल फैक्टर कॉस्ट। ओके, सो coming to the another point, we can say TC is what? TC is TFC plus TBC. So TC is the summation of TFC, that is fixed total fixed cost, and TBC, that is total variable cost. Is it so? Hmm. Now, uh, coming to the point, that is fixed. Let me tell you that fixed cost is also known as supplements cost, supplementary cost, which is also known as indirect cost. Okay. Now, whereas talking about variable cost, so variable cost को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राइम कॉस्ट, ओके, और डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। नाउ, taking a diagram, this is TFC. T TFC. Why TFC is just a horizontal to x-axis? Because as we all know that whatever the output level, okay, whatever the output level, no matter आउटपुट लेवल जीरो है कि आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी कांस्टेंट। ओके, जब आउटपुट, लेट सपोज कि अगर मैंने प्रोडक्शन ही नहीं किया, ठीक है, आउटपुट जो है वो जीरो के बराबर है, आउटपुट जो है वो जीरो के बराबर है, फिर भी उस केस में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ रहेगा नहीं। जो क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्शन करने से पहले सोचते हैं कि ये लाना पड़ेगा। जैसे बात करें लैंड की, तो प्रोडक्शन करने से पहले या आउटपुट को प्रोड्यूस करने से पहले हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, ठीक है, कैपिटल बनाने बैठानी पड़ेगी, मशीन्स वगैरह लगानी पड़ेगी। तो ये सब क्या हुआ, आउटपुट तो हुआ नहीं लेकिन कॉस्ट लग गया। तो दिस विल कांस्टेंट।
So this is what fixed cost that is horizontal to the x axis, कि ये दिखा रहा है कि आउटपुट लेवल अगर जीरो है फिर भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट वही है, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो that is what TFC, this is the shape of TFC, okay, total fixed cost। So this is still here, and I will make you understand later, like tomorrow I will go ahead for variable cost and the shape of the variable cost. Thank you so much.